नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर फिर पंगे शुरू हो चुके हैं। बट द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज इज बिकमिंग अ पेन टू एवरीबॉडी। तो एक डिस्कशन काफी टाइम से चल रही है कि भाई हाउ टू बाईपास दिस, इसको जरा साइड कैसे करें। इट्स नॉट एन ओवरनाइट जॉब, इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी डन एकदम से। इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ मनी। आई हैव विद मी कैप्टन सुधीर खंडारी सर। नमस्कार, वेलकम टू द शो अगेन. And we'll talk about how we can do this, or is it even possible, and what are countries trying to do. करने की क्या कोशिश है, and let's talk about that. Sir, ये जो Hormuz का है, I mean, a lot of, see, we are also, everybody is getting impacted because this damn war doesn't seem to be, coming to a close. And लड़ते रहते हैं लोग आपस में. तो कल परसों रात को भी बॉम्बिंग शॉम्बिंग ये वो past 2-3 days they've been what do you call attacks in Dubai. Uh, what do you? I mean, is it possible to divert as soon as people are saying, "Ki, bhai, we need to get rid of the Straits of Hormuz itself"? First of all, namaskar to all your audience. Sir, Adi, the thing is that uh, थोड़ा अगर इसमें डीप में जाके देखें तो हम लोग बोलते हैं कार्टेल, द ओल्ड कार्टेल एंड द न्यू कार्टेल. जो ओपेक के एक नया बन गया था, डिफाइन द ओल्ड कार्टेल, एंड यूए निकल गया उसमें से. ये कार्टेल जो है, दिस इज नॉट के एक पावर है जो यूएसए या यूरोप और वेस्ट जिसको हम बोलते थे पहले. इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, वो हम जैसे जैसे आगे प्रोग्राम में जाएंगे विल लुक एट इट. एक बात ये समझनी चाहिए कि ऑयल बाय इटसेल्फ, इट्स नॉट दैट के ऑयल बिलोंग्स टू द कार्टेल एंड दे वांट टू डू अवे विद दैट पर्टिकुलर ओनरशिप. उस ऑयल के साथ बहुत कुछ आ जाता है, जो फाइनेंसेस, इंश्योरेंस, शिपिंग, जो बंदे उस शिप्स को मैन करते हैं, देयर ट्रेनिंग. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लॉन्ग अगो एक स्पेशलिस्ट टाइप का, एक फॉर स्पेशल काइंड ऑफ अ कंस्ट्रक्शन, एक वो वेसल था, एंड आई वाज कैप्टन ऑफ दैट वेसल, एंड आई वाज द फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू बी ऑन दैट काइंड ऑफ अ वेसल एंड इन दैट रीजन. आई विल नॉट डिस्क्लोज द कंपनी नेम फॉर certain confidential reasons. Surrounded by people of fairer skin, and their only thing was how to send him back. So, well, I accomplished the job. I did full contract. As a matter of fact, I did 3 contracts back to back for that particular project. Later on, they became friendly with me, but my struggle was, the that how to make myself secure. That politics they used to play to throw you out, for that matter, because I was an Indian at that time. That was long ago, I would say. And now, when we see that the third world countries, or we say global south, people have got hands-on experience which were treated just as workers or laborers for that purpose, they are equally good in their job, or maybe better than them, I would say. If not better, then fine, as good as them. Can work at lower wages than those people. Companies cannot afford that kind of expenditure. So, like Filipinos, Arabs, Egyptians, Asians, Indians, अभी उनको वो तकलीफ हो रही है. तो एक तो है कि owning the vessel, then the manpower. But one thing is not, which is they are still controlling hard, is the finances, the financial flow part of it. तो इसको हम देखेंगे आगे कि उससे निकला कैसे जा सकता है, और दुनिया में क्या हो रहा है, जो जैसे पर्टिकुलरली से चाइना और यूएसए और इंडिया और रशिया, और हमको अपना क्या करने का है. वी विल लुक एट दैट ओनली. सो if I have to say, to start with,
See, when we talk of the oil security, now oil security is not about who owns the barrel. It is about who controls the voyage, right? Owning a barrel and controlling the voyage, the delivery are two different things. And that's where the old cartel, that concept of owning the barrel, is changing over to that who controls the flow of that barrel, the voyage. Uh, can we have a slide number 1, please? Now, I'm sorry if I turn my face this side because I got a screen over here, the other one where I have the maps for myself. Uh, yeah. So now, if you look at these particular 4 maps which I've displayed over here, before we understand these routes, let's say that the voyage begins much before a tanker or a gas carrier or a product carrier it enters the Strait of Hormuz. It begins at the oil field, then at the gathering station, the pipeline, the storage tank, and then to the berth where the ship has to load that cargo. And then comes your insurer, the bank, and the route, and the refinery, which is like where you're going to receive that oil. So if you look at that thing, like people will say Port of Fujairah, like, we can see over here. But Port of Fujairah is basically for your Habshan Fujairah pipeline. And we all know that that capacity, people have been talking about 1.5 to 1.8 million barrels a day. But the question is, that is one grade of oil, that is the Murban oil, which is the purest form. It is the what you call a flagship oil of UAE from Abu Dhabi, and it's on the land. From on the land, connecting a 400 kilometers pipeline to Fujairah. It's a 48-inch dia pipe and 406 kilometers. Well, good enough. It has come to Fujairah. What Fujairah has? She has got 9 berths, 14 wing berths, and she has one single point mooring for VLCC, or single buoy mooring, whatever you want to call it. Now, the thing is that we are talking of 20 million barrels of flow through the Hormuz per day. Can 1.5, 1.8 replace it actually? Well, somebody can say that, Das Island and Zirko Island, as you can see in the map, they are the offshore loading terminals. But those offshore loading terminals, the positions are approximate here, it's not to the scale. They have to still go through the Hormuz here. Now, somebody say put a pipeline from Zirko to the mainland, from there to Fujairah. I told you the Fujairah limitation and capacity at the moment, which they may increase for the ships later on. But what we see at the moment is just what you call your one pipeline. One pipeline cannot carry different grades, because जितना भी oil है उसका different density है, जो कि हम API नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो वो सारा का सारा तुम एक पाइप से नहीं बेच सकते. वो यू कैन से द प्रोडक्ट विल बी कंटेमिनेटेड, और एक ब्लेंडिंग टाइप हो जाती है उसके लिए. तो वो पॉसिबल नहीं है. उस शिप को हॉर्मुज से निकलना पड़ेगा. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से इज, इट क्लियरली शोज 6-7 ग्रेड है यूएई के पास. अपर जुकम, लोअर जुकम, देन योर दास का है, देन जिरकू से है, लोडिंग एंड टर्मिनल्स यहां से. तो सारा का सारा क्रूड ऑयल जो है, दैट इज नॉट सिटिंग एट वन प्लेस. एक ही पाइपलाइन से भी तुम नहीं भेज सकते हो. तो ये कहना कि यूएई हैज फुजेरा सो Hormuz can be bypassed is not fact at the moment, as of now.
Can we go to next slide, please? One minute, please. See, मुरबान जो हम बात कर रहे हैं मुरबान का, दैट इज अ लैंड बैग, वो ऑनशोर है, वो ऑफशोर नहीं है. तो ऑफशोर ग्रेड्स दे कैनॉट हैव द सेम एस्केप रूट व्हाट इज ऑन द लैंड. तो एक क्वेश्चन हमको अपने से पूछना चाहिए, विच क्रूड, विच ग्रेड, फ्रॉम विच फील्ड, which pipeline, into which storage tank, from which berth to which ship, and where the destination. So these are the numbers given here for your audience to appreciate. एक देखे, मैं नंबर्स बोलना नहीं चाहता बिकॉज बहुत नंबर हैवी लोडेड हो जाएगा, पर आप ये देख के समझिए कि कार्गो तो है, उसको ले जाने की प्रॉब्लम है ना. So the question still remains, can the oil move? And as a person who is supposed to carry that oil, he will say, first question, can the cargo be gathered? Can the cargo be stored? Can the cargo be loaded? Can the cargo be insured? Then comes the documentation. After that, sailing, and then to be delivered. Now, for example, my refinery may be able to, refine all the products, or India has number of refineries. We got a very good refining capacity, I would say. But if I'm going to receive as a refiner, if I'm going to receive a particular cargo, which is a mixed grade because of the pipeline, pumped a different pipeline, या फिर अगर हम बोलें कि छोटे शिप जो हैं वो उसको ओमान के कोस्ट के पास से चले जाएं, शिप टू शिप ट्रांसफर कर दें ओमान के, वहां जाके बड़े जहाज के ऊपर, पर वो अगर कहीं से बीच में मिक्स हो गया, आप बात कर रहे हैं एक शिप की जो दूसरे शिप में लेके आया, लोड कहीं से किया है, उसने शिप को दिया है, आगे जा रहा है. अभी ये जो लायबिलिटीज होंगी मिक्सिंग की, यानी कार्गो क्लेम डैमेजेस की, रिफाइनर बोलेगा आई डोंट एक्सेप्ट इट बिकॉज मैंने तो ये ग्रेड मांगा ही नहीं था, ये तो सैंपलिंग में आपका ग्रेड कुछ और बता रहा है, इट इज नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स. तो हु इज गोना बेयर दोज एक्सपेंसेस? वो आपका शिप वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, डिस्प्यूट चलता रहेगा. सो इट्स नॉट सो इजी दैट यू कैन फाइंड एन ऑल्टरनेटिव दैट इजीली. अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे बिफोर दिस शो ऑफलाइन, कल रात को अटैक हुए हैं यार. अभी जो मैंने अपना शिपिंग साइट्स वगैरह में जगह से दूसरी जगह से मुझको कुछ जो इंफॉर्मेशन आई है, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी आज सुबह. दे आर टारगेटिंग वेसल्स आउटसाइड फुजेरा नाउ. एक शिप डैमेज हुआ है, फ्रेट के अंदर आग लगी है उसमें, दे आर सस्पेक्टिंग अ फ्लोटिंग माइन हिट. दे आर नॉट सेइंग एक चाइनीज शिप को भी मार दिया. वही बोल रहा हूं कि इस टाइम पे इट्स फ्री फॉर ऑल. वो कॉस्को के शिप को भी मारा उन्होंने. तो इस माहौल में टू से दैट आई विल हैव, अच्छा नाउ ये सडनली यूएई जो है ओपेक से क्यों निकल गया है? यू मीन टू से इट वाज एन ओवरनाइट डिसीजन? आदि ये डिसीजन जो है ये बहुत पहले से ही पाइपलाइन में होते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे. एक राइट अपॉर्चुनिटी देखी जाती है व्हेन यू से ओके आई एम मूविंग आउट. तो उसके ऊपर हम आएंगे पाइपलाइन वगैरह की फंडिंग के ऊपर क्या कॉस्ट पड़ती है और क्यों जो है ये फ्रेगमेंटेड सीन रहेगा. कमिंग बैक टू दैट, फ्यूजेरा ऑयल इंडस्ट्री जोन जो है, यहाँ जैसे ने बताया 70 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है और 1.5 1.8 मिलियन बैरल पर डे लाइन से आता है. पर जो 70 मिलियन बैरल कैपेसिटी को एक्चुअली में ये लोग बोल रहे हैं, जो पोर्ट की रिपोर्ट्स हैं, बट वी शुड नॉट कंफ्यूज द टू नंबर्स. पोर्ट का रिपोर्ट के मुताबिक इट इज 18 मिलियन क्यूबिक मीटर्स. दैट टर्न्स आउट टू बी
113 million barrels actually. तो वो सारा का सारा, जैसे मैंने बोला, तुम नहीं लोड कर सकते हो। किसी टैंक में गैस ऑयल है, किसी टैंक में कुछ और है, कोई और ग्रेड का है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस क्लाइंट ने पहले पैसा दिया हुआ है, किसको देने का है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, एक रिफाइनरी की, जैसे आप बोल लो, एक थ्रूपुट है 230,000 बैरल, जैसे ये बात करते हैं आपका ये रास मरकाज है जो ओमान में, हम उसकी बात करते हैं, मैक्सिमम दे हैड गॉन अप टू आई थिंक 250 और 1000 बैरल्स पर डे. पर जो हम बोलें कि रास मरकाज हैज अ रीजनल क्रूड बाईपास लाइन. इट इज नॉट अ थ्रूपुट, इज नॉट अ पाइपलाइन एक्सपोर्ट कैपेसिटी. एक रिफाइनरी की अपनी पाइपलाइन है, एक क्रूड की अपनी पाइपलाइन होगी. तो अभी कुवैत और ओमान की, जिसको हम बोलते हैं OQ8, मेरे ख्याल से OQ8 बोलते हैं, जो 50-50% जॉइंट कंपनी है डूकम में, वो 80 किलोमीटर उनकी रिफाइनरी पाइपलाइन है. और आगे ये सोच रहे हैं कि वो 440 कोई 450 किलोमीटर का एक रास मार्कास के साथ और ओमान की मेन पाइपलाइन करने के लिए. नाउ दिस विल बिकम एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन फ्यूचर. इफ ओमान इज एबल टू बिल्ड दैट कनेक्टिविटी हमारा मरकाज और दुकम के बीच में, तो दैट विल बिकम अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ. And it's quite a good capacity, but we can't say that, आज की डेट में हम बात करें कि वो अवेलेबल है. कैन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? Let me know, Adi, because I can't see your slides. I have to see my own slides. So मैं यही बात कर रहा हूँ. Sorry, you're saying something? I was just reading out. Strategic reasoning hormones can be reduced, not erased. Yeah, it cannot be erased here. So अगर हम बात करें, एक और पोर्ट आता है, have I mentioned over here or not, maybe in the previous or next slide, एक सोहार है, जो अभी सोहार जो है उसका जो यूजफुल है, that's an industrial port here. That is for the refined products. It is not for the crude export. आपका लॉजिस्टिक या पेट्रोकेमिकल बात कर लीजिए. सो इसको हम बाईपास नहीं बोल सकते हैं एट द मोमेंट. इन ट्रू लैंग्वेज, फ्यूजेरा इज एन ऑपरेटिंग बाईपास, एंड दुकम एंड रास मरकाज जो है वो एक फ्यूचर आपका स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए है. एंड सोहार कैन नॉट बी मेड बिकॉज जो इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप है उसी को एक्सपैंड करके इट विल बी अ स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. Now, Hormuz cannot be reduced. We can say Hormuz redundancy is not a pipeline project, as it is obvious for what till I've spoken till now, and you can see it over here. यार, उसको बनाने के लिए जो पाइपलाइंस की हम बात कर रहे हैं, अभी 1.5 to 1.8 million barrels का कैपेसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. 2008 it was $3 billion project which was completed in July 2012 when it became operational. Now can we replace it? आप देखिए कि 20 मिलियन को 1.5 तो रिप्लेस नहीं कर सकता है, और मैंने बाकी भी प्रॉब्लम्स बताई हैं आपको. जो वो 20 मिलियन करने के लिए आपको you have to make 10 odd pipelines here, और आज की डेट में उसका खर्चा क्या आएगा? It may reach $100 billion. और LNG की अलग प्रॉब्लम है कतार के साथ. LNG जो है सेम क्रूड लाइन से नहीं आ सकता.
एलएनजी जो है वो एक माइनस से 163 डिग्रीज पे लिक्विफाइड फॉर्म में, पहले गैसियस फॉर्म में लेकर आओ, उसको लिक्विफाई करो लोड करने के लिए, उसके बाद जहां पे जाएगा उसका वो रीगैसिफिकेशन करना पड़ेगा, वो एलएनजी ग्रिड डिफरेंट बन जाती है। तो बेचारा कतार से जो आपका रास लफान से गैस आती है उसके लिए तो डिफरेंट पाइपलाइन रखनी पड़ेगी। अगर वो सब ऐड कर दोगे तो 12 13 14 पता नहीं कितनी पाइपलाइंस बनानी पड़ेगी। और पाइपलाइन बनाने के लिए यू नो द फंडिंग, द इंश्योरेंस एंड द योर लैंड क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, देन क्रॉस बॉर्डर में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, you know, all those problems will be there. So this is redundancy is not a pipeline project. You can say अगर कुछ ऐसा करते भी हैं तो we have to talk in terms of if I use a particular word, uh, I would say a regional replumbing project, regional energy replumbing project it would be. तो वही बात आ जाती है ओल्ड कार्टेल न्यू कार्टेल। We are not talking of owning a gas field or an oil field or the cargo or the barrel. We are talking about something else, the movement of that energy. So इससे क्या होगा कि आपका अगर बन भी जाते हैं ऐसे बाईपास तो यूएस का स्ट्रेटेजिक गेन क्या आप ये देखिए, Iranian choke point leverage is reduced if oil can flow through US aligned corridors. Now the question we're coming back to again, US aligned corridors. ये एक बात ध्यान में रखना, मैं बाद में इस पर फिर से आऊंगा जब इंडिया और चाइना को सेम चीज में हम कंपेयर करेंगे। रिस्क जो है वो हॉर्मुज से निकल के कहां चला जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड बाय गल्फ स्टेट्स एंड यूएस लिंक्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो इसमें अगर यूएई ओपेक से निकला है तो उसको कैसे तो सिक्योरिटी चाहिए यार। यूएई के पास ऑयल है पर उसको मूव आउट करने का उसको किसी तरीके से। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, दूसरा बात में एक और आता हूं कि सऊदी अरेबिया जो है क्या वो यूएई को करेगा फंडिंग इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए? Why Saudi Arabia will fund UAE? Because when the UAE is gaining the market strength. क्या ओमान जो है वो फंडिंग करेगा इसकी यूएई के प्रोजेक्ट के लिए? उसको तो अपना दुकम और रासमर का उसको प्रमोट करना है उसको। तो फ्रेगमेंटेशन तो होगा ही ना अरेबियन कंट्रीज में। सऊदी अरेबिया जो है he would like to strengthen the Yanbu side, yeah, pipeline that side. Why would he be interested in strengthening the UAE project? And we all know the differences between UAE and Saudi. So now the barrel, as I said, what I've spoken till now, you can say that a barrel is only the visible part. The old cartel logic does not end with production. It survives through the chain around the barrel. And that chain I've clearly defined in this particular slide: the oil price, the ship, insurance and your protection and indemnity club cover, freight and damage, finance and payment, refinery security. Now the question is, for India, is not that who sells the crude, it is who controls the voyage. Anything, any questions, Adi, on this particular? So the only factor is, I mean, कहीं ना कहीं अगर आप when you look at it, इसको we need to kind of also see the fact कि भाई where does the great so-called power USA want to sit? Adi, I will come to that also, but since we have come to that side, see, India will have to acquire ships here.
We don't have that much of own self tonnage. When I'm using the word tonnage, that many number of ships, VLCCs or tankers for that. Now, Indian government has already planned to have 112 by 2040 various type of tankers at the cost of, if I'm not wrong, something like 85,000 crores, if I remember the figure correctly. पर अगर मैंने शिप ले भी लिया, इंश्योरेंस भी मैंने अपना कर लिया इंडिया के अंदर, अपना मैंने प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब जो थर्ड पार्टी कवर करता है वो भी अपना एक ओनर्स का बना लिया यहाँ पर इंडिया में, वॉइस पूरी मेरे कंट्रोल में आ गई, क्योंकि मैं उस बात पे बाद में आना चाहता था, आपने पूछा तो अभी बता रहा हूं मैं। यूजुअली जो एक क्रूड कार्गो है ना, ये एफओबी टर्म्स के अंदर आता है, फ्री ऑन बोर्ड। व्हेन वी टॉक ऑफ फ्री ऑन बोर्ड, तो होता क्या है, जो सेलर है उसने तो ये क्रूड ऑयल का कार्गो आपके जहाज में डाल दिया, उसके बाद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी जो है वो बायर की हो जाती है। तो अक्सर जो है यूजुअली रिफाइनर और अ बायर विल नॉमिनेट ओनशिप, he'll have his own insurance, so वो P&I कवर भी अपना अपना इनका अपना चलता रहेगा, अपना होगा, क्रू वगैरह सब कुछ वो बायर की साइड से आ जाता है। अगर हम इतने शिप ले भी लें और साथ में हम लोग अपना इंश्योरेंस अपनी कंट्री में खड़ा कर दें, पर क्या वो इंश्योरेंस जो है दैट इज एक्सेप्टेबल टू अदर कंट्री? क्योंकि जितने भी इंश्योरेंस की जो रेपुटेशन है, उसकी क्लेम हिस्ट्री पर या आपकी पेइंग इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और एनी इंसिडेंट, इट डिपेंड्स ऑन दैट। दैट रिलायबिलिटी फैक्टर कैन ओनली कम इन से a sovereignty, a sovereign, what you call guarantee or assurance. So, and again, when जब इंश्योरेंस की बात करते हैं, there's another clause of re-insurance. वो री-इंश्योरेंस कौन करेगा? अभी तक तो सारा जो हुआ है कंट्रोल लंदन, यूएसए, न्यूयॉर्क, ऑस्लो, दुबई, इन सब के पास है, और ये सबका सब कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर रिटन इन डॉलर्स हियर। तो उसके लिए यू हैव टू हैव दैट मच ऑफ डॉलर लिक्विडिटी आल्सो। सो अगेन समबडी वुड से कि यार चाइना भी तो है, चाइना हैज गॉट अ इकोनॉमी हेफ्ट, they have got number of shipyards, they can make a number of ships, and they have a massive tanker fleet, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है। लेट्स नॉट कंपेयर ourselves विद चाइना। चाइना का रिक्वायरमेंट जो है आदि, वो जो है इट्स नॉट द बाइंग द ऑयल, उनका है predicted and regular unimpeded supply all the time. Otherwise, their manufacturing export economy will just sink. वो already नीचे जा रही है, they cannot sustain that. Second factor, China जो है उसका trust factor, as we all know, is not very high with the other players. कल इंसिडेंट हो जाएगा एंड चाइना विल से आई एम नॉट पेइंग, एंड यू नो द चाइना ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, आई विल रिमूव दिस पर्टिकुलर थिंग। मोर देन हाफ द कंट्रीज जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसने डेट ट्रैप में लिया हुआ है। ही हैज साइंड वेरियस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद अफ्रीकन कंट्रीज एंड विद ईरान। सो पीपल डोंट ट्रस्ट चाइना दैट वे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया का जो हम बात करते हैं, we cannot walk out of the system which is already existing saying that, yeah, after tomorrow morning breakfast I am out of it, though we may wish to do so, but it cannot be done that way. We have to develop, I would say, resilience part of it while staying within that system which is dollar dominated today. Staying within that system, we develop our own resilience and develop the
and never attempt to challenge. Like, that's my personal view, others may not agree. Do not challenge or go dead against US dollar system, which has a considerable power as of today. Let's be frank about it. तो वो सिस्टम जब तक पूरा आप सिस्टम के अंदर रहकर ही फ्लो विद द टाइड, हम अपने शिप हैंडलिंग में बोलते हैं कि you cannot fight the weather elements. Use the same weather element to your own advantage while handling your vessel. You have got a limited power with your thruster or with your main propulsion. You cannot fight the outside force if it exceeds your own power available to you. So we have to stay within the system, be a part of it, and have our own independent voice control. China, well, you can't stop flow of oil to China because the world economy will crash. We all know that. But China ke liye also one thing is very important, which it is being affected now, is that they don't control the route of the oil. The voyage of the oil is not under their control. That is still, if you look at it today, जैसे हम बात कर रहे थे कि उसने चाइनीज शिप को भी ठोक दिया ईरान ने, और अ फ्लोटिंग माइन पे नाम या बेरिंग एंड रेंज तो किसी शिप का लिखा नहीं हुआ कि उसी को जाके मारने का, इट्स अ फ्लोटिंग माइन, इट कैन हिट एनीबॉडी. और आर्टिलरी शेल मारना किसी को था बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ शिप्स आर एंकर्ड एट 2.5 cables, यहाँ के वहां जाके लग गया. So all these things do happen. So we are talking of controlling the voyage, having your own system, that if India has to have an alternate supply कि यहाँ पे आग लगी हुई है, मैं ब्राजील से या वेस्ट अफ्रीका से या कैरिबियन से या यूएसए से ले आता हूँ, या टुडे वी हैव टू डिपेंड ऑन समबडी एल्स शिप, और क्राइसिस में वो आदमी प्राइस जो है मल्टीप्लाई कर देगा. If I have my own ship, I have my own freight, I have my own sovereign, what you call, funds institution to support me for finance and insurance. So that is my point of saying that India should develop a system within the existing system and not fight the existing system. Now, what happens when you fight the existing system here? Like, you may have resources, you may have everything. Look at Russia. They have the resources. But can they move out their resources? They're handicapped. China, with all that power they speak about, or as it is projected, I would say, can they really move on the routes which are not under their control? They can't. So this is the general, if you look at this PPT, that's what it talks about. And as we proceed further, people will be able to, your audience will be able to appreciate it better. Can we go to the next slide? वो इंडिया की बात कर रहे थे, या मैंने आपको भी एफओबी का भी समझा दिया. मैंने बोला था मैं आऊंगा इसके ऊपर, वो पहले ही बात हो गई. तो ये 300 मेट्रिक टन है. बात करें अगर हम डेड वेट टनेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑयल जो हम एपीआई नंबर डेंसिटी से बात करते हैं, बट लेट्स टॉक ऑफ द टनेज हियर. तो एफओबी can be a routine free on board during peacetime year, but in crisis it becomes your vulnerability. और the problem क्या आदि कि mostly जनता को, I'm not saying the masses as such, the people as such, and they're not supposed to know all these things. Like, only the people on this profession are supposed to know. The TV channels and everybody starts talking about the prices have gone up, the gas price, this thing, that thing. You see, it is not under our control at the moment. And world की आप जितना भी देख लो, global south का भी बात कर लें, किसी के पास control नहीं है यार. So free on board is good during peacetime, but in crisis it becomes your vulnerability. So that vulnerability we have to get over today. And it's not going to happen with a click of the fingers and tomorrow you wake up in the morning and that problem is solved. It will take time. 2040 तक का टाइम दिया गवर्नमेंट ने.
शिप ये नहीं कि 112 शिप दो एक एक करके शिप आएगा. We'll be getting over those problems slowly. Patience is the name of the game in this. Can you move to the next slide, please? हम 112 शिप की क्यों बात कर रहे हैं, जो मैंने बात की है आपसे. Let's take the average density of say approximately 0.7, but it varies from 0.68 to 0.789 for crude oil that we are referring to. Different API numbers depending on the sulfur content and the other density and the metal and the wax in the residuals in that. So अगर एक VLCC जो है ऑन द एवरेज हम बात करते हैं कि 2 मिलियन बैरल लेके जाता है, वो रफली बोल लो कि 270,000 टन हो गया. तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है 7-8 वॉयजेज जो है एक VLCC की पर ईयर. तो आपको 50% जो बाहर से क्रूड लेके आ रहे हैं हम लोग, वो इंपोर्ट करने के लिए you need 65 to 75 tankers of that size or a mix of various sizes of tankers. And to lift up 3/4, you need 95 to 110 tankers. And government has already planned for 112 tankers. Come se kam, we people should be grateful to the government and appreciate that they are moving in the right direction. ये news आज की तो है नहीं. They foresaw this problem. That's why they're going into it. Well, before this crisis started, government had initiated these steps, I think, almost 2 years ago. Anything from your side, Adi, before you move to the next slide? So capacity is the main key, sir. अगर आपको डाइवर्ट भी करना है, the main key is what? Capacity. Simple. Exactly. And why should I pay extra freight during crisis time if I have my own fleet? In any case, the oil that comes to me is not the cost of the wellhead here, cost at the wellhead. It is the cost delivered at my doorstep, which includes freight, which includes insurance, which includes risk premium, everything. Can you move to the next slide, please? That's what I was trying to say. The cartel influence weaken only when buyer nations control lifting, insurance, freight, and finance. Now, here I will say one thing: the global South unity, it should not be just mere a speech or just a slogan. Countries like Brazil, Argentina, West African nations, India, we have to be united to move forward to develop that kind of independence. But that doesn't mean that the USA or China will let you do it, because everybody wants to have their own gains out of it. So stay within the system and develop your own resilience. Can you move to the next slide, please? Now, one important part here, Adi, I forgot to mention. When the actual port or field that gets blocked, the bypass that becomes valuable. So the exit door becomes a target. You agree or not? Now, if Abu Dhabi and Dubai or their fields or the Hormuz is a blockade, the exit door, Fujairah, will become the target. And that's what we did a couple of days ago, if I'm not wrong. Again, you look at you see, they're not targeting storage or the points from where it will be transported. They're targeting the refineries. Because Iran is also scared that if we target the storage, the other side will retaliate the same way. So a good sense is prevailing, I would say, till now, that we haven't reached that stage where they start targeting each other's storage capacity and the loading terminals. Having said that,
see, there people say that Iranian tankers or ships are able to pass through the US blockade, and US blockade is not effective. Adi, one thing, there are two things, two aspects of it one has to see. Yeah, open sea is a very vast area. You can't fire a missile from 100 miles to say that if you don't stop, I will fire at you. What you do, your idea is to board that vessel first. Second idea is, if she is not stopping, you will not fire your, I won't say a missile, a normal naval gun, a 5-inch gun on a cargo holding the cargo tanks or the cargo hold. You will aim at the after section of the vessel, which is above the water line. That is where the steering gear compartment is there. So you damage her, what we call electronics and the hydraulics. She cannot steer, she will stop automatically. And the engine room is also there below the superstructure. And to fire at that, you have to come very close to her. Who knows that China is supplying the satellite imagery to Iran and telling them where the US destroyers or frigates which are carrying out blockade are positioned, and that vessel can alter her route and go clear of that particular blockade. It's like, Colonel Ajay and you, everybody would speak about Colonel Ajay and you when you talk about infiltration part of it. Yeah, you cannot put a man at every meter to say that nobody will come from other side. You have to depend on sensors and some kind of a barrier. So blockade is also as good as a barrier. That is the first thing. Second thing is, what if we totally blockade the Iranian vessels? Not even a single ship pass through. Let's assume, okay, it is done. If China doesn't receive that oil and the crisis on that side, won't China come into open war and the escalation will be multifold? Out of sheer desperation, he may go on Taiwan. Then the पूरी दुनिया में पटाखे बज रहे हैं उसके बाद. So there are few things which one has to accept. It is like this and it has to be like this. And storage की बात करें, do not trouble other person that he has no escape route. कल को ईरान जो है, taking a cue from 91 जो सद्दाम हुसैन ने किया था, if he opens the tap of his flow right in the open sea and sets it on fire, do you want to have the entire Persian Gulf contaminated with crude oil, or there's a fire on the sea surface? Although the currents in the Persian Gulf are counterclockwise, but when the shamal wind during winters or other time when the wind changes direction, the same thing flows towards the UAE side. उनका desalination plant एक बार crude oil से pollution से वो choke हो गया, तो उनके पास पानी नहीं होगा. So everybody understand this and give them bit of an escape route. 50 में से 3 टैंकर निकलने दो यार, 47 टैंकर्स को रोक लो. What do you say, Adi, on this aspect? यही तो हो रहा है ना sir. This is exactly what is happening. So we say manage disturbance. Create a disturbance, but it is managed. Manageable stuff. So बात करते हैं कि अगर नए टर्मिनल्स बन भी गए यार वहां, और STS भी बना लिया, शिप टू शिप ट्रांसफर लोडिंग टर्मिनल्स भी बना लिए, $100 बिलियन खर्च भी कर दिया, आज से 7-10 साल बाद बन भी गए. The amount of other infrastructure required, the number of pilots required, number of tugs required, a dedicated anchorage area, a dedicated ship-to-ship transfer, SCADA that you're in the automation days today, there's a lot of emphasis on SCADA also, that cyber security. Somebody opens the valve, hacks into the system, opens the valve or closes the valve, opens the valve and it goes into the sea and closes the valve, a back pressure in the pipeline, पीछे से पूरा का पूरा उड़ गया, pump पूरा गया. And there's a pollution on the land. So the things are not so easy as we see, but the alternatives are being considered. Can you move on to the next slide, please?
अगर हम अब बात करें, taking a cue from here, as I said, the exit door becomes the next valuable spot, and the valuable spot obviously will be the next target, the exit door. Now we are talking of Fujairah, Duqm and other places. तो अगर हम प्रोबेबिलिटी में देखें फ्यूचर में कहां कहां हो सकता है, इमीडिएट तो वी आर सीइंग दैट गल्फ ऑफ ओमान बेल्ट, साउथ ईस्ट वेस्ट यानबू, रास लफान गैस फील्ड, कतार का जो है दैट एग्जिस्ट्स. सेकंड ऑर्डर स्क्वीज, अगर यहां से नहीं निकल पा रहा है, और अगर आप ब्लैक सी या बाल्टिक सी, बाबेल मंडप, Suez, Cape, Malacca, Singapore Strait, the secondary squeeze. Malacca, Singapore Strait, as we all know, China's dilemma, Malacca dilemma as we call it. But putting a squeeze over there, you're stopping the other cargo which comes from Cape or being rerouted is not able to pass through that. And again, out of desperation, China, which is the biggest importer of energy, may take some very catastrophic step out of sheer desperation. And Black Sea, we have discussed it with you, Ari, with you a number of times. The Baltic Sea, जो आपका है, Caspian Pipeline Consortium and Novorossiysk, Primorsk and उसका लगा, वहाँ पे तो already यूक्रेन ने मारा भी है. Again, they have put it at the, not at the production, at the refinery part of it. So they are these places are the replacement barrels from Hormuz, replacement for Hormuz. बहुत पहले मैंने आपसे एक प्रोग्राम में बोला था, द प्रेजेंट क्राइसिस जो है, जब हम बात करते हैं कार्टेल की, it is not about, as I said, controlling the oil. I had used the word oak triangle, OAK. शायद मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत बार लिख चुका हूं. मैं 2-3 साल पहले मैंने बोला था ओक ट्रायंगल, OAK, ओमान, कश्मीर, अफगानिस्तान. And I had said, can China break out of this oak triangle? And by the way, that this term oak was coined by me only. I've not taken it from anywhere. Reading this particular geography of this area, I said, if China cannot break out of this particular line, and Kashmir and Afghanistan, if you see, they're directly related down to Oman. और कश्मीर, ओमान का हम सब जानते हैं क्या हो रहा है. And China is badly trapped. They are not able to break out of this. So when we talk of replacement, अब replacement को भी तुम अगर उड़ा दोगे, तो what will happen then? So those particular places, they become the second order squeeze. स्ट्रेटेजिक शेडोज बात करें अगर हम यूरोप के लिए, जिब्राल्टर, लीबिया, नॉर्थ अफ्रीका, देयर विल नॉट बी एनी ओपन वॉर ऑफ द जिब्राल्टर. आई एम सेइंग अल्जीरिया या ऊपर जो आपका नॉर्थ अफ्रीका है, लीबिया जो है, अगर यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस होती है, दैट अफेक्ट्स यूरोप, बिकॉज दे आर गेटिंग गैस फ्रॉम अल्जीरिया, दे आर गेटिंग ऑयल फ्रॉम लीबिया थ्रू द मेडिटेरेनियन. और जिब्राल्टर है जो वेस्टर्न कैरिबियन को, सॉरी वेस्टर्न मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है अटलांटिक के साथ. तो देन कैरिबियन, पनामा, साउथ अटलांटिक. अगर कल को कुछ बात होती है, अगर अर्जेंटीना ब्राजील के बीच में यूएसए कुछ चाबी लगा देता है, या कैरिबियन में गायना और वेनेजुएला का जो डिस्प्यूट चल रहा है वहां चाबी लगा देता है, सो दीज आर द स्ट्रेटेजिक शैडोज. वी हैव टू वॉच आउट फॉर दीज प्लेसेस आल्सो. कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, all the things are not happening simultaneously. So what I had said on your channel, I think 2 or 3 months ago, rerouting of the price. Rerouting of the price, jab baat kare, I'm coming back to the same thing. We should have our own tanker fleet, own insurance system, own war risk premiums, and be within the system to avail the reinsurance from the Western Hemisphere, which they are controlling. Anything else, Adi, from your side before we move on to the next slide? Yeah, we can, sir. Yeah. So the flashpoint one, which I spoke about,
एग्जिट डोर्स, फ्यूजेरा का जो सिंगल पॉइंट मूरिंग है, एंकरेजेस हैं बर्थ वगैरह पे, your loading arms, berth windows, all these things are basically the next valuable targets. And that's why we say the bypass is not just a route, it is a port queue with insurance attached. And insurance is the passport for the ship. Without passport, you cannot go anywhere, and ship cannot go anywhere without insurance. Can we move to the next slide, please? Flashpoint, as I discussed with you, Yanbu, the Red Sea route, and the LNG trap for Qatar. कतार के पास एस्केप रूट नहीं है इस टाइम पे, कोई पाइपलाइन मैंने बताया कि कहां कहां से होके जाएगा. Then the different memorandum of understanding between different governments, and everybody looks at their own strength, funding part of it, finances, all those things come into play. And we can say the oil bypass can move the crowd, but as of today and in the near future, LNG problem has no simple bypass. So, having said that, I'm still surprised why the sanctions on the Russian gas is not being. I was anticipating, but sooner or later, Russian LNG sanction will be lifted because Europe cannot survive with that, and Europe will come to some kind of understanding with USA. Uh, for Europe to buy from USA, the transatlantic voyage is too long. It's too expensive for them. Can we move to the next slide, please? Your replacement barrels, I said the second squeeze will become the target next. When they become essential, the replacement routes that I spoke of, your Black Sea and the other side, those things they become a target. Can we move to the next slide, please? The strategic shadows, the Malacca, Caribbean, and the South Atlantic, as I explained. I'm showing the PPT now. The politics of your Falkland, South Atlantic, they can actually affect the insurance psychology. And Trump has made a statement that Falkland belong to UK rightfully. So, when people say that Trump is a mad guy, well, he's a loud mouth, बड़बोला है, ठीक है, पर वो कुछ भी ऐसी चीज देखो जो बोलता है उसका बहुत डीपर मीनिंग है. वो एक तरह से बोल के दूसरे आदमी को बैकफुट पे कर देता है. The punchline I will use over here: the more the world escapes Hormuz, the more it discovers other choke points waiting downstream. So it's what we see the Hormuz in the headlines, but there are other places which has an equal potential of becoming a choke point. And when I want to differentiate between the choke point and the bottlenecks. Well, choke point you can do something with the military, but the bottlenecks which I'm talking of, the infrastructure, that is the pilots, tugs, berth, waiting anchorage, dedicated place for ship to ship transfer, the insurance, the finance, everything is good. If somebody refuses the insurance, what you do then? You cannot move your cargo. Those are the bottlenecks basically. Can we move to the next slide, please? What we should do? I'm a normal person. I'm not in the policy making, or I don't have that kind of a input to various things. But as a normal person, I would say that we should not watch the Brent alone. We should have an operational dashboard, as I have written the things over here, and what we should build, and the cartel question which I had been repeating again and again. Oil, finance, freight, and insurance are interlinked.
Cartel influence will not vanish just because the barrel is available. It weakens only India when India controls enough ships, insurance, finance, ports, routes, and operational intelligence. Yeah. Sovereignty means the ability to lift, ensure, move, refine, and deliver without external permission. We should aim for that actually. The next choke point I've written over here will not announce itself as a war. It will first appear as a loading delay, an insurance refusal, a tanker shortage, damage because of the waiting. You hired a vessel, but vessel is waiting. And once on damage, there's a saying, once on damage, always on damage. It will keep multiplying on the daily basis. Or a refinery asking where the next cargo is. You're sitting helpless. And that helplessness should not be in the system that I'm saying we should be within that system and make ourselves resilient. We should not be helpless in that particular system. Mm. And Adi, before those are the PPTs I wanted to show. I have shared one Hormuz chart with you in the morning on the WhatsApp. Can you just display that? I want to touch upon that part also. Or should I send you again? Do you have, or should I send you? Is that up, sir? No, 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 no. No, it is the India's watch list. That chart has not come. I'll just forward it to you again. Is it this one, sir? No, no, no. I'm just sending you again. I've just sent it to you. Yeah, I put this one up, sir. No, you didn't put this one. Something else came over here. The previous slide came actually. No, I put this one, sir. Let's just try again. Yeah, it's loading now. Yeah, this one. Now you see the red lines over here is the actual Strait of Hormuz. The south line, the below the bottom red line is the exit, and the north one is the inward. Now, what Iran says, the route is shown by the sky blue line on top. Inbound and outbound, the south is outbound. Now, Iran says that, the Strait of Hormuz, if you look at it, the major part of it is towards the Oman side also. Even if, like I discussed with you about the 12 nautical mile concept last time, even if it says that I don't believe in the UN Convention of 1982, UN Convention 1982, UNCLOS 1982, yeah, then you believe in the 1958 Convention. That was a 3 nautical mile territorial waters, the cannonball short range. So, by any chance, how can you say toll on this particular red lines? And why should I actually follow that route of the sky blue? Now, what recently for the last 2-3 days, USA is saying the passage hugging the Iran coast, that is the green line shown over here. The vessels to transit that side. And I said the exit door will become the target. Now, Iran is targeting vessels off Fujairah. Mm. They're firing drone and rockets that side. And I have a template with me. Somebody sent me. That template says, the information they are asking, well, couple of information is a standard what you call world over. In between, they're asking the information which is not asked by anybody. They're clearly making it that have you taken my permission to transit one line? I am supposed to give you the data what you asked for
for the purpose of any transit a coastal state may ask for, and vessel traffic scheme. I've given the data about my vessel, and you tell me if any danger is there or any what you call other navigational hazard or any collision risk exists. But you never, world over, all my life I have sailed, I never asked anybody, have you taken my permission to transit this particular region? Sorry, nobody asked that. So this is basically indirectly trying to say slowly, slowly I will take over this, and nobody is going to agree to that. I discussed with you last time. Now the green part of it, the region we are talking of, that is too close to the offline dangers here. Well, the deep waters might be there. The big ships, they need sea room to maneuver, and the kind of traffic density that we are looking at, it will be difficult to go through the inshore zone. And the inshore zone, when you come to, there are the local coastal traffic, small boats, small tankers, fishing boats. There could be a fishing haven somewhere, and a big ship cannot avoid other ship if a danger of collision is there by maneuvering that easily. They need a bigger sea room, the size of VLCCs and all. So basically, what I'm trying to say is that the green line might be there. They are targeting the exit door of Fujairah. That's all from my side, Adi. Anything you have you want to add to it from your side? No, I mean, these are very comprehensive presentations. I mean, must say that this is going to be more difficult than people are envisaging. And log bol rahe hain ki bas ho jayega, everything will be done in this and that. Let's hope that optimism remains, क्योंकि things are going to get worse before they get better. इसका कोई doubt नहीं है. Yeah. उसमें तो कोई दिखता है that is now cleanly displayable on everybody's plate. On that note, sir, thank you so much for obviously this wonderful effort and the time. आपसे हमेशा maritime laws and maritime domain के अंदर काफी सीखने को मिला है, especially on the trading routes and stuff. So thank you very much for always more. And to the audience, मेरा सबसे request है, please like, subscribe and share this with your friends and families. And of course, if you can, support the channel, check out our description, join our groups. And namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. Yeah.